amongst the artist family over here, a room full of musicians, singers, composers, and lyricists. This was a dream which we began quite some time back, and today, the fact that we are going to announce Goongoonalo and what Goongoonalo is truly a proud moment for all of us. So thank you very much once again for coming today. Okay, so I just thank a few people and then I will let the others speak. Firstly, when I got this idea a few years back, I first approached my engineering buddy, who's a tech genius, and many years back, he's made his, internet company and sold it to Yahoo, came back to India, and we wanted to start something together. And it requires a person of this caliber to have a platform that is going to be able to support this much of heavy data. So let's all have a loud round of applause to Sridhar Ranganathan, my engineering buddy, and one of the founder members of Goongoonalo. And then, of course, there's one gentleman who's been there right from my first project that I've ever done, standing by me like a guiding light, like a mentor, like a teacher, like an inspiration. So I had to go to him and share this idea. And the minute this idea was shared with him, he just lapped it up and he said, I'm there with you all the way. So the second founding member of Goongoonalo, none other than the one and only Javed Akhtar sir. Let's have a round of applause. So then every artist, the simplest way was I had to call everybody. Javed called a few artists, Sridhar called, I called. And the minute my fraternity, the minute they heard the concept, instantly it was only yes, and they just jumped straight into it. So a big thank you to all the artists from the artist family. Let's say this has to be the loudest round of applause. Because without this platform can't happen. And then we found somebody who's going to take this and execute it. Because, as you know, we are all a room full of busy artists over here. So actually execute it, we had somebody in mind whom we approached and she readily agreed. So let us thank Shirley Singh over here, who's the CEO of Goongoonalo. Thank you, Shirley. So all these people who have been part of this family, and also there are many people who will be joining in, and they're not artists, but they're going to become part of this family in the next round. And they have joined in even before Goongoonalo is launched. Even when we announced, they are already part of the family. So I thank all those people who have said, we'll reveal that at a later date, but thank you those people who are going to be part of the family very soon. So thank you. Yeah. The whole idea is to create one of the biggest platforms, which is, the difference is, this is a platform by the artists, for the artists. So I'd like to call upon Sridhar to just speak for a couple of minutes and then we'll reveal the app. Oh, okay. For all those people who want to know who are the people who are part of the shareholders, the difference is they are shareholders of this company. So, Javed Akhtar, Samir ji, Hariharan, Shan, Vishal, Shekhar, Arijit Singh, Anupam, Prasunji, Sunidhi, Shreya, Aruna Sairanji, Papon, Salim, Suleiman, Anandji, Milanji, Amit Trivedi, Kavita, Vijay, Irshad, Srinivas, Lalit, Shweta, Anusha Mani, Amita Bhattacharya, Ehsan, Loy, Akshay Hariharan, Harshdeep Singh, Mahalakshmi Iyer, Raju Singh, Manan, Bikram, Siddharth Mahadevan, Saumil Shingarpuri, Rachel Singh, Joshua, Akriti Kakkar, and Shankar Mahadevan. So these are the people. Oh, once more I'm getting breathless. Okay, so let me call Sridhar. Just here is
Um, and thank you, Shankar. That is a wonderful introduction of what the dream was. Now we have so many artists, and more artists are going to come, which means what? There's going to be more content, more interaction with fans, much more than you can consume in a day. So what do you need? You need a fantastic digital platform that connects you, connects instantly, makes all the features it's very slick. We have fantastic UI designers as well as back-end and front-end engineers working. And we'll just show you a little bit about what they have done so far. Take a look. Welcome the one and only Javed Akhtar sir. Good evening, everybody. To be honest, I'm rather overwhelmed by seeing so much of talent under one roof. Wonderful, and thank you very much, all of you who have come here. Time keeps flowing. Days become weeks, weeks become months, months become years, years become decades. But there are certain days in the world which are more important than the whole decade. Now, there are few examples. Like it was 8th November 902, 1902, when for the first time in this country a song was recorded. Sung by a 14-year-old girl. Her name was Sushi Mukhi in Calcutta. Then there was the first star singer. That was Gaurajan. In her life, she has recorded more than 600 songs from 1902 to 1920 in more than 10 languages. Then Alamara, 14th March 1931, the first talkie was released. And fasten your seatbelts. It had 50 songs. 50 songs. And I'm not surprised because, you see, cinema has inherited the structure from a traditional theatre, whether it is Nautanki or it is Urdu Parsi theatre or Ram Leela or Krishna Leela or plays which are almost 3,000 years old like Mirchakatikam, Shakuntalam. We have always narrated our stories, epics with songs. India is the only country in the world that has two classical traditions, hundreds of years old, Hindustani and Carnatic. We have folk songs in every language and different kind of folk song. India can very well be called a country of music and songs. So that was a very important day. And I suppose after that, the important day which came in our lives was 22nd of May, 2012, when there was a major amendment in copyright. And for the first time, the composers, the writers, the singers got their share by the law. Maybe it took us 5 years to see to it that these laws are implemented. And it was 2007 when IPRS, which is the official government-recognized body for collecting royalties, was taken over, or at least we had an equal share in power in IPRS, the writers, composers. When we took it over, it was earning 42 crores per year in 2017. After 6 years, in 2024, it has crossed 730 crores. So in a way, we are doing well. So why did we need Goongoonalo? Because I think, again, the milestone day, which will be remembered in the history, is today, 5th of May. When, you see,
There are two kind of musicians, writers. One who work for film industry, one who are in classical, semi-classical, non-film music. Both of them had one problem. You see, working in film industry is a commission job. Somebody gives us a situation, and we have to compose a song, write a song accordingly. And the final judge is the director of the film, the producer of the film, and rightly so, because they are making the film. We are commissioned to do that work. So we don't have, to be honest, have the final say. On the other hand, we have great classical talent. The lady is sitting in front of us, who doesn't know her? But, I mean, the marketing department doesn't let this talent or this caliber or this art reach the common man. I mean, there are elites, there are more sophisticated people with developed taste, and they go out of the way to share this great treasure of art or music. But it doesn't reach so many people. Now here we needed complete freedom. I am not saying that that's bad. I mean, I write film songs, I write poetry, whatever I feel like. I decide the meter, I decide the topic, I decide the length of the poem or whatever. But when I'm working for a commission job, obviously I have to listen to the people who are paying me or who have signed me. Nothing wrong with that at all. And one should not feel that he is exploited. I mean, it's your choice that you are doing it. And fine. But here you have more freedom. Now, we, for the first time, have provided a stage, provided an opportunity to the composers, writers, singers to do what they feel like doing. Write, compose, sing the way they want to do. They don't have to be answerable to anybody. They don't need anybody's approval. Even within us, within Goongoonalo, we have no committee which will pass or approve or disapprove any composition or any writing. Every artist, every member of this society is totally free to give at least four compositions every year, whatever you feel like, whatever you prefer to put in public domain. This kind of freedom on this scale is a major happening. Because any name worth its salt is the member of this group, is this shareholder of this company. People will come. And for the first time, even that art, which is much superior, great art, but has not reached the common man. It doesn't reach because there is a marketing department which perhaps has their own reservations or preferences or their own expediency. It's not my business to talk about them, but it doesn't reach common people. This is the time when on this popular platform, we will have total freedom. All kind of music will reach to all kind of people. It's a major happening. We don't realize it today, but after 20 years, after 25 years, May the 5th will be one of the biggest milestones in the history of Indian music. That's our promise. So thank you very much for being here. And believe me, you are sharing a historical moment. And after many years, you will tell your grandchildren, I was there when it happened. Thank you. From the media, anybody wants to discuss anything, any ideas, any suggestions, please feel free to do so. So, can I invite... And open questions to the media. Himanshu? Yes, yes.
लोग तो आपस में मिलते ही रहते हैं और हम एक दूसरे से बातें करने लगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मैं चाहूँगा कि let it be a Q&A between the audience and us. Q&A का मेरा experience ये है that the first two questions come with great hesitation, and after that everybody has two questions. So who will bell the first two cats? That is decided. Huh? Mike, Mike. जावेद साहब नमस्कार. जी. I think I have finished my quota. मैं request करूँगा honestly. अरुणा जी आप शुरू कीजिए कि अरे आपको आपने जब तो पहली टेक बार- ओवर ही कर लिया. आपने सजेशन दिया, हमने मान लिया, बस खत्म. प्रसून जी आप बोलिए. She is the only lady in the group. A very good evening to everyone here, and such a privilege and very special moment to be here with all these amazing artists and creative people. I would like to share with you in very short the thoughts that are running through my mind. Although I am trained with a very senior guru and come from a classical background, and all my life I have rendered classical music, one part of me has always loved every other form of music that comes my way, be it folk, be it film, be it Brazilian music, or be it any other music, any country I go to. I like to collect that music and listen to that music. And sometimes when I listen to these songs, particularly folk songs, particularly when any of these artists sing amazing songs, I tell myself, oh, is there something that I can do in this popular medium? Is there something that can include me in that format, in that forum? Or am I boxed into a kind of a field and there are no windows or doors from which I can come out of that and also be a part of this, not to be not a part of what I am in, but be a part of everything else? I've always had this duvidha and wondered, how am I going to navigate all these things? Because time is always at a premium, you're constantly traveling, juggling, and so on. And there comes Goongoonalo with all these amazing creative people and says, here is a platform. You can be a part of this. You can talk to musically or otherwise, converse with all these other artists and create something that makes you happy and will stand the test of time, and time will tell how good or not so good it is, but you'll have the satisfaction of putting it out there. And so I jumped at it. It's truly a very special moment. People who give their right arm to have the kind of prowess you have and the privilege you have. And Goongoonalo, there are so many people who are deprived of your magic. It has not reached them. And Goongoonalo is the bridge that will take this, because, I mean, they deserve, they want and they deserve to reach to your music. And I think that will happen. Sonuji, my friend and the shareholder of this company, I'll request you to say something. मतलब कमाल की बात है कि the only name left out was mine. I am the chosen one, truly. Heartiest congratulations to all of us for this special day of our lives. A lot of people's hard work and dedication has made us reach this day and experience this moment. As far as, in very short, I'd like to say that from the time I arrived in Mumbai in '91 to become a singer, my first friend that I made was Raju Singh, who's sitting over there on the other end. So we both are taking care of this row. He's sitting over there taking care. I'm in charge here. So we started. I learned a lot from him because he
was back then also a senior musician and a composer, and I learned a lot of things from him. At the same time, he was very kind enough to work without asking me for any money. We started working on some songs, and the only thing that we had in our minds back then also was ऐसा कुछ करते हैं जो कोई नहीं करता. हम तभी सोचते थे कि ऐसा we would never work कि ऐसा कुछ कर लेते हैं. We made all odd songs, weird songs, and today we realize that those songs that we made are now making sense. But back then they were just two crazy children, musically enthusiastic, trying to do something different. And I guess people will not have to wait for that long because of Goongoonalo now, because I can really envision me working with so many different people whom I have never been able to work with. I know all of them, I know Kaushiki, but I'd like to do something with Aruna ji, with whoever nice, whoever wants me. And so many composers will have access to do whatever they want to do. The lyrics writer can get more creative because they're not no longer limited to a movie or a theme or a story or an emotion. So as Javed Sahab rightly said, we are really, really witnessing a very momentous moment, and this will be remembered in the future as one of the most important days of the history of music. अनाउंस किया कि आज वो चैरिटी करेगी तो बड़ी लंबी लाइन लग गई. मजनू को तो बहाना चाहिए था उस तक पहुंचने का, तो उसने भी वो क्यों ज्वाइन कर ली. अब सबको वो खुद दे रही थी, वो प्याला रखते थे उसको दे देती थी. तो अचानक धीरे धीरे करके मजनू भी वहाँ पहुँचा, तो उसने मजनू के प्याले को लात मार दी. तो मजनू खुशी से नाचने लगा. तो लोगों ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम खुश क्यों हो इस बात पे. कहला खुश मैं इस बात पे हूँ कि मुझे लैला ने बाकियों की तरह ट्रीट नहीं किया. सर मैं प्रसून जी से कुछ कहना चाहूँगा. First of all, I think a real congratulations to all of us. So big round of applause for all of us. Yeah. And the ones who brought this, Shankar Mahadevan, Sridhar and Javed Sahab. I mean, आप लोगों का सारी इंडस्ट्री को बार-बार शुक्रगुजार होना पड़ेगा. I feel that is how it is. दुष्यंत कुमार जी थे, उनका एक शेर था, उसमें उन्होंने कहीं लास्ट में कहा था कि वो बोलता बहुत है मगर बेजुबान है. तो अब वो there is the fact that we all have mics, we all have pens, but often I meet our friends, composers and writers all, and often I hear that पता है ये पहले क्या था, पता है ये शुरुआत में कैसे क्या लिखा था मैंने, ये सुनिए ज़रा. तो कहीं एक मलाल रह जाता है कि जो मैं कहना चाहता था वो कहने नहीं दिया गया मुझसे, कि जो मेरे अंदर पनप रहा था, और what I wanted to say, what I originally wanted to say, probably that I could not say. Somewhere I have seen in an artist. So that excuse is over. एक ऐसे इमारत में आप उड़ रहे थे कि आपको लगता था बार बार पंख टकराते हैं, काश आसमान होता. तो शायद वो आसमान भी वापस, that the commission art we used to talk about, yes, there's great work has been done in commission art, but I think we are probably going to commission it to ourselves, which is going to be a new reality. And I feel that the fact that anywhere with Javed साहब तो जाते ही हैं, मैं भी जब भी जाता हूँ कोई पूछता है कुछ सुनाइए, तो often वो गीत आप सुनाते हैं जो शायद इतने मकबूल नहीं हुए, इतने पॉपुलर नहीं हुए, इतने लोगों तक नहीं पहुँचे. आपको लगता है मेरा ये वो बच्चा है जिसको सब कुछ नहीं मिला, तो आप कहीं से निकाल के उसको सुनाते हैं. So this kind of syndrome will probably, and in the era where everybody seems to be becoming a broadcaster, there are more storytellers than listeners today. There are more music creators than music listeners today. In that era, I think there is something which we should also not, because feel that कि आपको mic दिया गया है या आपको composer बनाया गया है, writer बनाया गया है, ये guarantee नहीं है कि आपको सच में आवाज़ मिली है. So I think this will be a beginning of a voice for the artist who supposedly should be having a voice, I think. शुक्रिया. और ये पहली बार होगा ऐसा
कि मेरा जवाब प्रसून जी ने पहले दिया, मेरा सवाल ये था इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सवाल बाद में आ रहा, जवाब पहले। मैं आपकी चीज़ें समझ सकता हूँ। एज ए मीडिया पर्सन हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। I'm a biggest एजेंसी टू फ्लैश आपकी बातें, आपके इंटरव्यू। हम भी कुछ गाना बजाते हैं तो हमारे को कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। आई होप गुनगुनालो के साथ हमारा ज़िंदगी भर ANI का टाई अप रहेगा। आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है, वैसे पहुंचाना हमारा काम। ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। प्रसून जी ने जो सवाल का जवाब दिया, उसका सवाल मैं बाद में पूछ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। हेलो हेलो, माई सेल्फ अभिषेक, आई एम फ्रॉम न्यूज़ हब। मेरा आप सभी से मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। सभी लेजेंड्स एक साथ आए यहाँ पे, लाइक फ्रॉम सिंगर, कंपोजर एंड म्यूजिशियन। मेरा ये सवाल था कि इसमें जो यंग जनरेशन है, जो बर्डिंग आर्टिस्ट है, वो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि ये सवाल आप किससे कर रहे हैं, वरना हम लोग में झगड़े हो जाएंगे। तो दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि ये जवाब शंकर साहब देंगे। शंकर सर, यार आप दे सकते हैं सर। हाँ, See, गुनगुनालो में we're going to be working in phases. तो जो पहला फेज है, ये आर्टिस्ट शेयर होल्डर्स, we are going to be creating the content now. और हमारे बीच ही इतने कॉम्बिनेशंस है क्योंकि where is it that you're going to find, which platform you'll find, for example, Hari ji collaborating with maybe a Kaushiki or an Anusha Mani, or Sonu ji collaborating with Aruna Sairam, or you know, a platform which is wholesome और depth है, aesthetics है, उसमें poetry है, अच्छी melodies हैं, तो पहले तो हम लोग उसमें जो content है वो डालेंगे. Then based on our Goongoonalo family, we will decide on recommendation of our family, we will get in artists from outside, which will be maybe 100, 200, 500, 1,000, it'll come. But they will all pass a test. You can't just come and be part of Goongoonalo. It'll be under the recommendation of at least one of us from this. So that's how we're going to increase the number of artists, number of content, and make this one of the biggest platforms. Multiple languages, multiple genres. You name the genre and you'll have it here in this platform. May I add something, Shankar Sahab? That perhaps everybody who will be a part of one song or the other may not be the member of Goongoonalo. Tomorrow, Ehsan Sahab decides to do a song, and he finds a young man or young girl who are very good singer, and obviously they are not the members, but he has the right to use this person. Or if you find some, Prasunji finds some very talented young composer, he has all the right to give his lyrics to him and make it, and he'll put it on the site, but the person who has composed it may not be the member, and he'll look after that person's interest. So that way, every member will be able to find talent and bring it in. There is no restriction on that. A new lyricist, a new singer, a new music director. If a member wants to bring him in the work or her in, the member is allowed. So that is how they can come. If they want to become a member, they want to be a shareholder, no problem at all. Months. Samir ji, Hari. Yeah, the registration fee is to make sure that we don't get riffraff. That's the reason it is there. Yeah. Hello. Good evening, everybody. It's a great day. It's a historic day. Doing creative music has always been
my, I would say, life, singing all kinds of genres of music, be it film, be it ghazals, be it bhajans, like a lot of us here, be it fusion. But what sets Goongoonalo apart is whatever we do for this company is for us. And I've always had creative, what do you call it, people gave me that, or I used to take creative freedom, I would say. The artists, the curators, they own the company. It is theirs, is their temple. Hence, the creation will be of a very high level. At the same time, there is a lot of responsibility on us. All our experiences of the writers, of the singers, of the composers come into play. So I'm really expecting amazing music to be produced and put in the market by Goongoonalo. All the very best, and we are here to stay. Thank you. Music director या singer, I want everyone to गुनगुनाओ in an album at least once in 3 months, जिसमें आपके creative efforts भी हम सुन सकते हैं और newcomers को भी हम सुन पाएंगे. ऐसा हो जाएगा सर. Thank you, ठीक है, Jyoti. कर लेंगे. Can we hear Samir ji, please? Samir ji. I must tell you one thing, Jyoti ji and we are very old friends, and thankfully both of us have sense of humor. So there was this kind of a press conference. So he asked me one question. Then he asked me the second question. Then I said, could anybody else ask his third question? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. मेरे ख्याल से जावेद साहब ने और आप तमाम लोगों ने सारी बातें कह दी हैं. एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है. प्रसन्न, आपने दुष्यंत कुमार का एक शेर सुनाया, तो मेरे ख्याल से हम सबका जो ड्रीम है वो इस शेर में है कि पीर पर्वत हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए. तो उस बदलाव के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है. अक्सर बहुत सारी ऐसी कविताएं, बहुत सारी ऐसी नज़में होती हैं जो हम फिल्मों में नहीं दे पाते. कई बार ऐसा हुआ कि हमको किताबों में वो देनी पड़ी कि अब फिल्म में तो सिचुएशन आएगी नहीं, जब जो कुछ हम तन्हाइयों में लिखते हैं, अकेलेपन में लिखते हैं, किताबें लिखनी पड़ी उनके लिए. और अक्सर जो नए बच्चे आते हैं वो हमसे हमेशा ये पूछते हैं कि कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें और हम अपना काम दे सकें. तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर प्लेटफॉर्म उनके लिए कोई नहीं होगा. जावेद साहब और शंकर ने ये सपना देखा और हम तमाम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं. और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेटफॉर्म पे, ख़ास तौर से क्रिएटिव फर्टिलिटी के लिए कहीं मिलेगी. मगर एक चीज़ से थोड़ी सी शिकायत ज़रूर है कि जिस तरह से इस काम में लोगों को आगे आके काम करना चाहिए और अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए, वैसा लोग दे नहीं रहे हैं. उन लोगों से बार बार कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप प्लीज़ गाने दीजिए, प्लीज़ गाने दीजिए. ये आपका प्लेटफॉर्म है, किसी और को कहने की ज़रूरत पड़े ऐसा होना नहीं चाहिए. तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट जितने लोग हैं बेस्ट काम जो करके देना चाहते हैं इसमें दे दें, क्योंकि इसी से हमारा आने वाला फ्यूचर जो है सिक्योर्ड होने वाला है. थैंक यू वेरी मच. समीर साहब, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी रहा है क्या, इसलिए शायद नहीं दे रहे हैं. वही Ehsan, let us be. Hi everybody.
The one word that comes to mind is the most beautiful part about creating music, which is collaboration. And we've been doing that now for how many years? The three of us with 30 years. 30 years now, actually, collaborating with everybody. I think we've collaborated with everybody who's sitting here. So it's just fun. The possibilities are endless. And I was just thinking about it. I could play blues and have Javed Saab just talking over it. Or I could play like country western and have something else on top of it. So the possibilities are endless, and it's going to be like one huge kitchen where everyone's going to just bring the ingredients in and cook out this lovely food. And that's it. And the thing is that I know that in the future, there are a lot more plans about publishing the music and doing proper publishing the way it is done, where you send catalogs abroad and maybe people in America will pick up your music and use it for something, or use it for sync, or there's a lot of possibilities. So that's the only thing. It's very exciting, and it's just superb that this is happening at last. And I'm going to thank these gentlemen here for creating this whole idea. Thanks. Salim, come here. It's a great opportunity for art to finally shine. Music and poetry is art form, and somewhere that, because we're so used to making a song to a brief or to a situation or to this moment where you're thinking, imagining what you're feeling, which is the true form of expression, is something that every artist should experience. We've always, in our country, film music has always been the main hero. And of course, the last few years have been amazing that independent music has risen. But still we tend to go into a sort of a web where we are making music or making a song based on a certain situation or or something that we are creating a brief for ourselves. There's, like Ahsan said, that I can just play blues and Javed Saab have spoken word on it. And these sort of creative things are going to be so inspirational, not just for I hate the word industry, I like to use the word community. Our community is going to inspire so many more artists who will be able to think freely and express music as an art form and not just as something that they need to do. So it's truly a historic day, and there's so much that my mind is thinking and my heart is feeling, and looking forward to the next few years. And as you can see, Shankar Mahadevan's wearing dark glasses because the future is so bright. He's not wearing dark glasses. Ajab, I've been asking him to do a blues album for the last only 25 years. तो अभी finally बनाएगा इंसान. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सोनू भाई ने बोला था कि हमने कितने टाइम पहले हम लोग सब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और सब, यस, एंड वी यूज्ड टू जस्ट बोस्ट टू आवरसेल्व्स कि वी आर अहेड ऑफ टाइम्स, तो वो सब आइडियाज, एंड जैसे आपने बोला कि आपने मेरे से बहुत कुछ सीखा है, तो चुपचाप मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज आई नो सो मेनी सॉन्ग्स you have played, right? So I see we all have there are sides in us. I call all of us as artist musicians, because हम में सब कुछ है, लेकिन सिंगिंग का, कंपोजिंग, राइटिंग, आई थिंक हम सब कभी कभी, मैं जावेद साहब से गाना सुन रहा हूँ तो ऐसे लगता है इनकी आवाज़ में ये कुछ अलग लग रहा है, So I think the collaboration is the difference. What we can all create remove the different sides of us, and actually create some experiment, And I'm really looking forward, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा. I think हमें जो freedom कभी थी नहीं, हम भी experience कर रहे हैं अभी नहीं. So I think we'll all have to get used to it. I think this, like you said, the first phase is between all of us, we start doing all the songs, and जितना delay मेरे तरफ से गाने देने में हुआ, I think आज से नहीं होगा. Thank you. Let's hear Papan. Basically, I think what Prashant ji said, I still can't believe this is happening. So maybe इसीलिए हम लोग समीर जी के गाना दे नहीं पा रहे. Actually, everyone's doing their own independent. Salim has done a great job with Bhumi and his own channel. So सब अपने गाने तो कर रहे हैं.
But I think this is almost unreal. I don't think this has happened anywhere in the world. I mean, just unbelievable. And मुझे लगता है इसमें एक और जो force होगा कि हम सब अपने अपने मेरा भी YouTube channel है, please subscribe. But I'm saying this is one platform where I release a song, everyone's going to push it. He releases a song, everyone's going to push it. That doesn't happen anywhere else. I think this is really. And also the difference is you are owner of the platform. Remember that. Sorry? You're the owner of the platform. That obviously, but this is going to be a big force. I think, I hope ये जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हो जाए. It'll be amazing. आप याद है तो एक बात, very important personality in the history of popular music. She sang in 10 languages, in different languages, even French and English. ये एक अजीब औरत थी. उस वक्त क्या था, ये राजा महाराजा नवाब लोग होते थे जिनके यहाँ जाके आपको गाना होता था. इनकी ईगो ऐसी थी कि सिंगर को खड़े होके गाना होता. Even the musician with the tabla were not allowed to sit down. So he would stand and play tabla, stand and play sarangi, or sitar, whatever. They were not allowed to sit. Gauhar Jan was the first singer who said, if I'll come to your darbar, my musicians will sit and I will sit. Otherwise I will not come. पहली औरत है जिसने कहा कि मैं बैठ के गाऊंगी, मेरे सिंगर बैठ के बजाएंगे. हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम बैठ के गाएंगे और बैठ के बजाएंगे. और एक बात कहनी भूल गया मैं कि हर बार मुझे लगता है कि जावेद साहब कुछ हम लोगों के लिए मसीहा बन के आते हैं. जब हम तकलीफ में आते हैं, चाहे कॉपीराइट का जंग जो लड़ना था या जो लड़ाई अभी हम कहीं बीच में फंस गए कि अब आगे कैसे जाएं, तो जावेद साहब ने फिर हमको आगे निकाल देने का रास्ता निकाला. तो थैंक यू वेरी मच जावेद साहब. आप नहीं होते तो शायद इस फ्रेटर्निटी को बहुत कुछ अधूरा छोड़ जाना पड़ता. मगर ऐसा ना कहिए कि मैंने आपको निकाल देने का रास्ता निकाला. ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट. I want to also add maybe some more important things about Goongoonalo. That Goongoonalo is firstly the only streaming platform in the world which is by the artist. There's no other streaming platform, which is a very big thing. There are lots of communities, lots of societies in the whole world, but an artist society, artists, writers, composers that have started a streaming platform is something that the world has never done. Also, it's not just a streaming platform, as you saw in this thing, that this is the only platform that has all kinds of social media behind the scenes. It can also allow ticket booking for artists and concerts, and a lot of things that happen in the studio, podcasts, spoken word, so many different aspects. Behind the scenes. Behind the scenes. The AV said everything, but I'm just reiterating what I know from my knowledge, that so much that is created by the artist community as a streaming platform and a social media platform. There's nothing like that in the whole world. That makes a big difference. शंकर सर, मेरा सवाल आपसे है. Just one thing to add here, that अभी से हम लोग we've started talking about hits and money and everything. It's very good that we do. But somewhere we need to also caution ourselves that this is, we're talking about happy artists here. We're talking about self-expression. We're talking about the fact we wanted to do this and we didn't do this. Let's not that somebody out there tells us that देखिए आपको पिंजरे की बहुत आदत थी या ज़रूरत भी थी. क्योंकि देखिए आप पिंजरे से बाहर बहुत खुश नहीं हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. So the question is that are we going to judge ourselves on every day, Javed Saab, that this is how we measure that the way we have been used to be measured and we talked about marketing people and people who came in between. They measured us success and they said नहीं इस तरह का नहीं चलता है. आपको इस तरह का करना चाहिए क्योंकि हमको देखिए आपने पहली बार किया था हुआ कुछ. Now here I think that somewhere the measuring scale has to change for ourselves. I mean, I'm just cautioning ourselves when we are venturing on this journey that the yardstick is only going to be hits or only going to be the fact that, or there is a happy Hariharan, more effervescent Hariharan is the yardstick. I couldn't agree more with Prasunji, but let me add one thing. See,
nobody denies the importance of marketing. Product and marketing, both of them are perhaps equally important. But at the same time, let not the tail wag the dog. That is wrong. You create freely and the marketing department should find the market for it. Don't tell us what is in the market. Market में ये चलता है इसलिए बनाओ. If that will happen, nothing new will happen. तो ये तो हो ही नहीं सकता. और जहाँ पिंजरे की बात है तो आपको मैं भी सबने एक एक शेर सुनाया है तो मैं भी काश ये शेर मैंने लिखा होता इतना अच्छा है. I envy the poet who has written this line. निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा. निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा. आज परिंदा बाहर आ गया पिंजरे से. निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा. अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है. हेलो एवरीवन, दिस साइड समक्ष नामदेव. सर मैं भी एक चीज नहीं बना रहे हैं. एक चीज है वो है गुनगुना लो. बट आई थिंक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू बी डूइंग व्हाट ईच वन ऑफ अस वांट टू डू. यहाँ पर जो हर आर्टिस्ट यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म में, सभी के अपने अपने they lead a very busy life, they're successful, they're popular, वो सब तो है. लेकिन हर एक आर्टिस्ट में, I can speak on behalf of all the artists over here, still there are certain creative dreams which are there in every artist over here कि यार, you know what, I want to do this, I want to try doing this, I want to collaborate with this person, I probably want to do a Carnatic music album, or do a collaboration with somebody over here. I want, as you were speaking, maybe a beautiful poetry with alap and just a grand piano, which is played by Laya Mendonça. Something like that. ये हर एक के दिल में बहुत सारे वो, there are dreams which are creative dreams, and this is the platform that is going to fulfill those dreams. So it's not a collective thing. Each one does whatever he wants to do. I just wanted to add to that. This will give incomplete diversity. I just wanted to say that the market you're talking about, Javed Saab bhi bol rahe the, Prashan ji, ki market is there and we are working for the market, but we are creating another market which will only have art, not to what the market is like. This will be a different market, I think. यहाँ पे कुछ और ही मिलेगा शायद, and we don't have to cater to the market which is, and that's why we are doing this. We don't want to cater to that market, जिसमें वो numbers and views and all that is there. This is a different market. I think it'll be nice. Okay, we have some amazing artists over here also. यहाँ जगह नहीं था, so I'd like to just take their viewpoint. Shahan, would like to say something? Of course, काफी वक्त दूसरे स्ट्रीमिंग साइट्स पे अपने गाने डालते हैं तो वहाँ एक वो जो कंपैरिजन होती है कहीं ना कहीं हमारा बट दिस इज आवर ओन प्रॉपर्टी एंटायरली हमारे अपने यूनिवर्स में हम गाने बना रहे हैं और जो भी इस यूनिवर्स में आना चाहे ऑफ कोर्स वी विल बी सो थ्रिल्ड एंड सो हैप्पी टू वेलकम देम क्योंकि इस तरह की यूनिवर्स और कहीं नहीं कहीं दुनिया में कहीं और का म्यूजिकल यूनिवर्स आपको नहीं मिलने वाला सो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फील वेरी ऑनर्ड वेरी प्रिविलेज्ड एंड thank you so much that finally of course 5th of May has arrived and we are all here and we are enjoying this wonderful evening and a big round of applause for everyone over here. Absat, thank you very much. I'm so glad that I could be here today, and as Javed ji said in the beginning, and honestly speaking, I think because I'm very humbly putting this point, but because I think most of the musicians, composers, and everyone whose major work or a big chunk of their work has been in films, we're talking a lot about having creative liberty, which I think Aruna ji will agree with me that we haven't had so much as classical musicians. We could sing a rag and decide it in the green room and think that audience will hear, aaj bihag gaane ka man nahi, aaj Bhagishri chalega. So we've had that liberty. But of course there are many other tree now. तो रीजन क्या था 5th of May को ही चूज करने का टू इंट्रोड्यूस गुनगुनालो टू अस? भाई देखिए we are dealing with people who are extremely busy. ये सब के सब लोगों को it is like weighing frogs कि इसको डाला तो वो कूद गया, उसे उठाओ तो ये निकल गया. तो अभी कोई out of 33, 23 are here. Frogs are here.
तो इसलिए हमने 5 चुना। ऐसा कोई हमारा सुपरस्टिशन नहीं है कि जो हमने डेट न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाली है, हमने मजबूरी से निकाली है। वैसे टुडेज 05/05/2025। जी मैं कलीम सलमानी एबीपी न्यूज़ चैनल से यहाँ पर किया जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि सरकार भी हमारी डिमांड पूरी कर सकती है। और क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप लोगों के लफ्ज़, आप लोगों के गाए हुए गाने और आप लोगों की म्यूज़िक अगर निकाल दिया जाए बॉलीवुड से तो बॉलीवुड यतीम हो जाए एक तरह से। तो बस आपसे सवाल है जावेद सर की, आपका शेर है कि इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होंठों पे लतीफ़े हैं और ज़बान में छाले हैं। आप लोगों को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सवाल ये है कि अभी हाल ही में संजय दत्त ने कहा था कि बॉलीवुड को भी इस तरह से एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड सच में बटा हुआ है? क्या उन्हें भी इस तरह से एक साथ आना ज़रूरी है? दुनिया में कहीं भी अलग अलग होने से बेहतर होता है एकता। तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो या देश हो या सोसाइटी हो, एकता हमेशा के लिए अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर आएंगे सब लोग एक साथ तो अच्छी बात। जावेद साहब आपके राइट में, जावेद साहब क्या आप मानते हैं कि मेरे पास माँ है, इस तरह के डायलॉग अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने बंद हो गए हैं? क्योंकि गाने तो समय समय पर आते रहते, जैसे सोनू निगम जी के गाने हैं, शान जी के गाने हैं, ऐसे समय समय पर आते हैं कि जो कई लंबे टाइम तक लोगों के जहन में रहते हैं। लेकिन मेरे पास माँ है, इस तरह के डायलॉग्स अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आते जो लोगों के जहन में लंबे समय तक रहे। क्या आप ये बात मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वैसे भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब किसी पिक्चर में डालते हैं मेरे पास बाप है, अब तो शुक्रिया आपने आइडिया दिया है। हेलो हेलो ललित जी, can you just... हेलो सर, मैं गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर मैं आयुष हूँ, शॉर्ट बॉलीवुड से। अच्छा सॉरी, आप पूछ रहे हैं? सर आपसे पहले पूछिए। टॉस कर लीजिए। कुर्सी पे खड़े हो जाइए सर, आप टर्न हो जाइए ताकि you'll be facing the camera. बहुत खुशी की बात है कि ये दिन आ गया है जब गुनगुनालो आकाश पे है, शुरुआत हो रही है। और मुझे हमेशा ही ये थॉट बड़ा इंटाइस करता था कि ऐसा टाइम कब आएगा जब एक म्यूज़िक को फ्रीडम मिले। हमने थ्रू आउट अपनी लाइफ फिल्म के लिए काम किया है और फिल्मों में सिचुएशंस पे काम किया है, बट टू थिंक कि ऐसा म्यूज़िक बनाना। और मैं आपको एक बात बता दूं, म्यूज़िक डायरेक्टर को हमेशा पता होता है कि कौन सा गाना अच्छा है। हालांकि वो प्रोड्यूसर की मान लेता है और कोई गाना उसको अच्छा लगता है तो चला जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता, सब पता होता है। और अब जबकि ये प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे हम अपनी दिल की कर सकते हैं, जो हमको पसंद है वो बना सकते हैं। ये एक फ्रीडम, जैसे प्रसून जी ने कहा कि पिंजरे में से एक बर्ड बाहर निकली तो उसको कैसा लगेगा। तो जावेद साहब ने इतना खूबसूरत शेर सुना है, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ गाने जो इसमें बने हैं जो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि शायद फिल्म में ना जाते, मगर यहाँ इतनी खूबसूरती से राइटर्स ने लिखा है और इतना मज़ा लेके हमने बनाया है। कुछ तो गाने हमारे जावेद साहब के साथ इतने पुराने हैं जो बना के हम रख देते थे, वो गाने हैं इसमें। और मैं सोचता हूँ कि वो गाने अब इसमें आएंगे तो वो उसका कैसा कलर आएगा। देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि म्यूज़िक 19 हो रहा है या 20 हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसमें सिर्फ मुझे कभी नहीं लगता कि इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर की फॉल्ट होती है, इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की फॉल्ट होती है। वो कहीं पुश इस तरफ कर देते हैं कि गाना उसी डायरेक्शन में बनाना पड़ता है, नहीं तो ओके नहीं हो पाता। मगर यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको पसंद है वो आप कीजिए और अच्छा करके बताइए, ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद आए। और मुझे लगता है जब इंसान अपनी पसंद का काम करता है और मजा लेके काम करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में असर करता है। ये म्यूजिक वैसा आएगा मुझे लगता है। लग रहा है ये सुरो की ड्रीम 11 बनी हुई है और कैप्टन सर जावेद सर है और आपके साथ बेंच में भी एक से एक प्लेयर्स पड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल एक्चुअली ये था सर
बेसिकली हम लोग 85 बॉर्न है, 90s के किड्स हैं, और उस समय पॉप का एक बहुत अच्छा कल्चर था। हम सब ने देखा सोनू सर के एल्बम्स आते थे, शंकर सर के एल्बम्स आते थे, और बहुत अच्छे एक से एक हरिहरन सर जी के एल्बम्स आते थे, और हमें बड़ा मज़ा आता था। हम गा नहीं पाते थे, हम सुन पाते थे और हम कनेक्ट हो जाते थे। सर, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने लॉन्च किया है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमको अब वो वाला दौर वापस से मिलेगा? सर, वो 90s का पॉप का दौर, सर शान सर खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक से एक एल्बम आए, एक से एक गाने आए, क्या वो रिवाइव हो सकता है सर? देखिए, कहीं मार्केट फोर्सेस ने एक तरह का असर तो किया है, और कुछ एक जेनरिक हो गए हैं गाने। जिस तरह की पहले गानों में डेप्थ होती है, प्रताप प्रसून साहब ने कहा था, उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, ये बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है कई बरस पहले कि हमारे जो गाने होते थे वो पीपल्स फिलॉसफी होती थी। उसमें पब्लिक जो है वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ती, फिलोसफर नहीं पढ़ती, लेकिन किसी क्या के हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये इस तरह के गीत होते थे जिनमें ह्यूमैनिटी जागती थी, मोहब्बत जागती थी, दोस्ती जागती थी, या दिल के जज्बात जागते थे। जो दुखी गाने होते हैं, हम भी तो दुखी हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, हर आदमी में कुछ दुख है, ये सब कम हो गया है। ख़ासतौर से सैड सॉन्ग तो बिल्कुल ही अब ख़त्म ही हो गए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऐसा ख्याल है कि ये नहीं चलते हैं या नहीं चलेंगे। तो ये ज़रूर है कि ये फ्रीडम जो मिली है कंपोज़र्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, तो आपको उनके मन की बात पहुंचेगी उन तक जो उनके दिल से निकली हुई, और जब बात दिल से निकलती है तो कहीं ना कहीं किसी दिल को छूती भी है। तो यकीनन जो आपको शिकायत है वो दुरुस्त है अपनी जगह। कमाल की बात यह है कि जो जितने ये प्रोग्राम होते हैं टीवी पे, बच्चे जो 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के, 21, वो अपनी पैदाइश से 60 साल पहले के गाने गाते हैं, 50 साल पहले के गाने गाते हैं, लेकिन अभी का गाना नहीं गाते। तो ये क्या बात है, क्यों है? मतलब हम जब पीछे देखते हैं हमें ध्यान नहीं रहता कि ये गाना जो है, ये रात भीगी भीगी, ये 60 साल से ज़्यादा पुराना गाना है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये 70 साल पुराना गाना है, और आज भी लोग गाते हैं, बच्चे गाते हैं। तो ये जो है, ये गाने दिल से निकले थे। अच्छा, वो है क्या कहानी, उसमें डेप्थ हो, ऐसी सिचुएशन हो जाए, इमोशनल सिचुएशन, हर गाना आइटम गाना अगर बन जाएगा, सॉन्ग होगा, तो उसमें कहाँ से वो डेप्थ आएगी, कहाँ वो ठहराव आएगा? तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो हमारे कंपोजर्स हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, इसको महसूस कर रहे थे, और इस कमी को कि वो नहीं कर पा रहे जो उनका दिल चाहता है। वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है भाई, आप कमीशन वर्क कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आपने डॉटेड लाइन पे साइन किया, आप ज़रूर कीजिए, वो भी जीना का सहारा है। लेकिन ये कि जो आपका अपना पर्सनल एक्सप्रेशन है, जो आप रियली करना चाहते हैं बगैर किसी कंपल्शन के, वो यहाँ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जस्ट ऐड कर रहा हूँ जो जावेद साहब कह रहे हैं, और कौशिकी जी आपने कहा, और यहाँ पे अरुणा जी हैं, शंकर महादेवन तो करते ही रहते थे वो, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस को उन्होंने कहा कि हमें तो फ्रीडम मिलती है। मैं इसका एक थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिल्म म्यूजिशियंस आर फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप बंदिशों को गाती हैं, ये बंदिशों में गाते हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क है। और शंकर महादेवन कोशिश करते रहे, स्टेज में गए, उन्होंने उन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश की है, और आई थिंक दिस इज अ कंसिडर्ड एफर्ट टू गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ देम हु प्रोबेबली वुड नीड दैट। देखिए ना, मैं तो कौशिकी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हालांकि मेरी बेटी की उम्र के हैं, बट आई एडमायर। मेरी बहुत तमन्ना थी, मैंने कितनी बार शंकर साहब से कहा कि आई वुड लाइक टू राइट अ सॉन्ग फॉर हर, तो वहाँ तो मौका मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मैं तो लिख दूंगा, पता नहीं गाएंगी नहीं गाएंगी वो इनके हाथ। जी, we have Shweta Mohan who's flown in all the way from Chennai. So that's the beauty, you know. It's, please remember, this is not going to be only Hindi. Not just restricted to any language. It's going to be multiple languages.
regional songs, folk songs, pop, jazz, fusion, blues, the works. And This is maybe going to only be- music. Maybe a sitar recital. Absolutely, yeah. Anything. Anything. Instrumental, Yeah. only rhythms. So, sky's the limit. थैंक यू। हमारे पुराने गाने जो होते थे उनका जवाब अलग होता था, और सर ये अभी जो रीमिक्स बना रहे हैं उन गानों की रेड़ मार रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? अपने प्रश्न का उत्तर आपने खुद दे दिया है। हाँ, मतलब आपने तो मेरे मुंह से सारे वर्ड ही छीन लिए। अब मैं क्या बोलूँ? ठीक कह रहे हैं आप। तो सर ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको आप रीमिक्स करें। कल को आप बोलेंगे कि अजंता में साइकेडेलिक लाइट लगा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, केव्स में अगर ताजमहल में डिस्को खोल दिया जाए तो क्या बात है। तो वो ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। देखिए हॉलीवुड में क्या हुआ था कि एक वक्त आया था जब पुरानी क्लासिक जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी उसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कलर किया, हंगामा हो गया। वहाँ के डायरेक्टर कहा आप ये नहीं कर सकते, जो ब्लैक एंड वाइट की पिक्चर्स हैं उन्हें आप ब्लैक एंड वाइट पर रहने दीजिए, बिकॉज दे वो बॉदर्ड अबाउट, दे वैल्यू देयर हेरिटेज। तो वो हमें भी करना चाहिए। आप नए गाने बनाइए, ऐसा क्या मतलब आप शुरू में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि नया गाना बना सके, ये तो बड़ी ख़राब बात है। आप नया गाना बनाइए और आप अच्छा ही बनाएंगे, क्यों बुरा बनाएंगे भैया। तो ये पुराने गाने लेके उनमें रैप डाल दें, आप ये कर दें वो कर दें। आई एम नॉट अगेंस्ट रैप, रैप बहुत अच्छे होते हैं, रैप करिए अलग से, मगर वो पुराने गाने में सब डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका कल्चरल हेरिटेज है। लता जी का गाना, रफ़ी साहब का गाना, किशोर दा का गाना, ये मुकेश जी के गाने, अब ये उनको आप संभाल के रखिए, ये हमारा धरोहर है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं करना चाहिए। Can I request all the Goongoonalo family to come here? We'll have a photo up now. दो एक लोग और हैं, मैं चाहूँगा वो उनका बोलना ज़रूरी है। अभी बैठ जाइए। आनंद जी, आनंद जी। India and not just the metros. That is suggestion 1. And suggestion 2, the technical workshops, if they can be provided for any upcoming musician. When I say technical, I mean, where they are invited to studios, all of your studios across Mumbai, across the country, they get to see firsthand how to operate the various devices. I think that will be a good addition. Thank you so much for your time, guys. That's a good idea. Good. Thank you.